வாளால் அறுத்துச் சுடினும் மருத்துவன் பால் மாளாத காதல் நோயாளன் போல் மாயத்தால் மேலாத்துயர் தரினும் வித்துவ கூட்டம்மா நீ ஆள உனதருளே பார்ப்பன் அடியேனே. किए गए वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सम्राट अशोक से इंस्पायर होकर अपने मोटो में पाली भाषा में लिखे पनेसु सेमो और अपने लोगों में अशोक के सिक्कों पर छपे बुल का प्रयोग किया। पनेसु सेमो का अर्थ है पशुओं के प्रति कंपैशन। महान सम्राट अशोक ने हेल्थ केयर में सभी जीवों का ध्यान रखा क्योंकि वे मानते थे कि मनुष्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एनिमल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हेल्थ केयर कैपिटल कहलाए जाने का पहला रीजन है तमिलनाडु का वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके तैयार होने की कहानी आज से सैकड़ों साल पहले ही शुरू हो गई थी। असल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आकर सेटल हुई तो इनिशियली उनके 3 मेजर सेंटर्स थे, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। और इन 3 प्रेसिडेंसीज में भी मद्रास में गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स का नेटवर्क बनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि मद्रास ट्रेड के लिहाज से काफी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड था और यहाँ से ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट पूरा सदर्न इंडिया कंट्रोल करते थे। 1664 में सर एडवर्ड ने भारत का पहला ब्रिटिश हॉस्पिटल मद्रास में एस्टैब्लिश किया ताकि कंपनी के सिख सोल्जर्स को ट्रीट किया जा सके। यहाँ पर यूरोप से डॉक्टर्स बुलाए जाते थे और उन्हें प्रैक्टिस पर लगाया जाता था। इसे एक्सपैंड करके 1772 में एक नई लोकेशन पर एस्टैब्लिश किया गया और आज ये हॉस्पिटल राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1800 से लेकर 1820 तक मद्रास में 4 और हॉस्पिटल्स को एस्टैब्लिश किया गया। फिर 1835 में मद्रास मेडिकल कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया, जो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है। और 1900 में वेलोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बना। ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई एस्टैब्लिशमेंट की वजह से इंडियन लीडर्स को भी एहसास हो गया था कि तमिलनाडु में हेल्थ केयर सिस्टम का जबरदस्त पोटेंशियल है और इसीलिए यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने की मुहिम आजादी के बाद भी जारी रही और स्पेशली तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में काफी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ओन किलपॉक हॉस्पिटल और रोयापेटा हॉस्पिटल के साथ साथ ये सभी हॉस्पिटल्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको भी डेवलप किया गया और इस डेवलपमेंट को बूस्ट करने में प्राइवेट काफी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ओन किलपॉक हॉस्पिटल और रोयापेटा हॉस्पिटल के साथ साथ ये सभी हॉस्पिटल्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको भी डेवलप किया गया और इस डेवलपमेंट को बूस्ट करने में प्राइवेट प्लेयर्स ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल डेवलप किया गया, SIMS हॉस्पिटल डेवलप किया गया और ये सारे हॉस्पिटल जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी लगातार डेवलप होते रहे। यही रीजन है தமிழ்நாடு இன்றைக்கு இந்தியாவுடைய மருத்துவ தலைநகரம் இருக்குது என்ற காரணம் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உருவாக்கின மருத்துவ கட்டமைப்பு தான் அதற்கு காரணம். இவ்வாறு தமிழகத்தில் பல அரசு மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர் முதல் குடிநீர் வரை எவ்வித அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாத நிலையில் உலகமே வியக்கும் மருத்துவ கட்டமைப்பை தமிழகத்தில் உருவாக்கியதே எங்கள் குடும்பம்தான் என்று வீண் விளம்பர அரசியல் செய்வதற்கு உங்களுக்கு வெட்கமாக இல்லையா முதல்வரே? அப்படி ஒருவேளை உங்கள் கோபாலபுர குடும்பம்தான் தமிழகத்தில் தலை சிறந்த மருத்துவ வசதிகளை ஏற்படுத்தியது என்பது உண்மையெனில் நீங்களோ அல்லது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களோ அல்லது உங்கள் அறிவாலய தலைவர்களோ ஏதாவது ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் ஒரே ஒரு நாள் தங்கி வைத்தியம் பார்த்துக் கொள்ள தயாரா? பதில் வேண்டும் முதல்வரே.
दोस्तों, सरकार कहती है कि आज पूरी दुनिया में इंडियन मेडिकल टूरिज्म की वजह से देश का डंका बज रहा है। दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज के लाखों लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आते हैं। 2023 में मेडिकल टूरिज्म इंडिया में 33% बढ़ा और 2024 में प्री पैंडेमिक लेवल्स को पार करने की उम्मीद थी। मेडिकल टूरिज्म का मतलब है जब किसी एक देश के लोग दूसरे देश में ट्रैवल करके जाते हैं सिर्फ कोई ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। इसके पीछे कारण है पैसा। इंडिया में डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम कॉस्ट पर हाई क्वालिटी हेल्थ केयर मिलता है, इसलिए हर साल लाखों फॉरेनर्स इंडिया सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो सस्ते में अपनी ट्रीटमेंट करवा सके। लेकिन उसी डंके की चोट पर एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ट्रीटमेंट सस्ती जरूर है, लेकिन इंडिया में अपने ही लोगों के लिए ये ट्रीटमेंट्स अनअफोर्डेबल है। बीबीसी की ये रिपोर्ट देखिए जो कहती है कि हर साल 55 मिलियन से ज्यादा इंडियंस हेल्थ एक्सपेंसेस की वजह से पॉवर्टी में चले जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा किसी बड़ी ट्रीटमेंट के लिए तो उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और अक्सर ये कर्ज उनकी आने वाली पीढ़ियां चुकाती रहती है। तो ऐसे में मिडिल क्लास लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। और अब ये हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है वो समझिए। मात्र 400-500 रुपए जैसा मंथली अमाउंट देकर कोई आम आदमी लाखों के मेडिकल बिल से बच सकता है। अगर आपको पहले से ही डायबिटीज या बीपी जैसी बीमारी है तो कई प्लान्स में आपको उस पर भी कवर मिलता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 3 महीने के वेटिंग पीरियड्स के प्लान्स भी हैं जिससे 6 महीने की प्रेगनेंसी पर भी 50,000 रुपए तक क्लेम मिल सकता है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में आपके घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपको किसी के भरोसे ना बैठना पड़े। बायो में एक लिंक दिया गया है जहां पर आप 50 से ज्यादा इंश्योरेंस के प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं और आपको 25% तक का डिस्काउंट और 30 मिनट तक का क्लेम सपोर्ट भी मिल सकता है। तो लिंक पर क्लिक करके आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान ले सकते हैं और दिए गए लिंक से इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ होम विजिट भी बुक कर सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस को बेहतर समझने के लिए अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो मैंने YouTube पर कुछ ही समय पहले बनाया था जिसे आप देख सकते हैं। इसका भी लिंक बायो में मिल जाएगा। இப்ப சைத்தான் மாதிரி வந்திருக்கு. சுல்தான், உங்களை என்னால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. ஒருபுறம் இலவச மருத்துவமனை அமைக்கிறீர்கள், மறுபுறம் மனித வேட்டையாடுகிறீர்கள். இலவச மருத்துவமனை அமைக்கும் அதே கையால் எப்படி சுல்தான் மனித வேட்டையாடுகிறீர்கள்? இலவச மருத்துவமனைகள், மனித வேட்டை, என்னை கேட்டால் இரண்டுமே ஒன்றுதான் பத்துதா. ஒருபுறம் ஏழை மக்களுக்கு நன்கொடை, மறுபுறம் தாங்க முடியாத வரி, ஒருபுறம் எப்போதும் அல்லாவின் திருநாமம், மறுபுறம் நெஞ்சிலே ஈவிரக்கமற்ற செயல்கள். The organization has issued various guidelines in relation to the coronavirus and has clearly mentioned that do's and don'ts regarding the whole situation. Many across the world continue to look for their own unique ways to contain the virus. Like Pakistan and Malaysia were quick to pick up the story of a small Hindu group in India which organized a gathering in which the participants consumed cow urine as a measure to increase their body's immunity to fight off any potential encounter with the coronavirus. Quite rapidly, this became a global story as the media outlets from across the world decided to give this incident a lot of exposure. These types of media exposures can easily bring the global attention to those groups or peoples who are yet to properly follow the science that the modern society endorses. But as a responsible global community, should we just stop here? Or should we also try to help and reach out to other groups whose practices are also not in sync with the best available science of today? Why should we be only concerned about the Hindu community? Isn't it unfair to other communities or groups which also deserve to benefit from such media exposure? Should an equal opportunity to other communities to get modernized? Has warned against consuming camel urine, but the consumption of camel urine for its medicinal purposes is still a common practice in many nations. What is even more disturbing is that camel urine is actually linked to the spread of a disease known as Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, which was first identified in Saudi Arabia in 2012. According to WHO, the MERS virus has been identified in dromedary camels in several countries, including Egypt, Oman, Qatar, and Saudi Arabia. Born in Saudi Arabia, this disease even took the lives of many in South Korea. Even the coronavirus pandemic appears to have worsened because of some religious practices. Laura Spinney, who is a British science journalist, notes, the South Korean cluster of COVID-19 seems to have spread via churches, while pilgrims in Iran have posted videos of themselves defiantly licking the Fatima Masume shrine in the city of Qom.
On the other hand, in America, televangelist Kenneth Copeland is miraculously healing his viewers of the coronavirus through their televisions, and in various churches across the world, magical healing sessions are organized regularly. Yes, in every religion, there are many behaviors and rituals that appear to be completely unscientific. Additionally, it should also be understood that the traditional medicinal system cannot always sync with the modern medicine, but as far as animal urine is concerned, modern medicine has accepted it too. A good example of this is the estrogen replacement drug Premarin, which is made from horse urine. But can we always ensure that science is not lying to us? If some religious people are blind about their faith, then many science lovers are also blind about science. In 2012, the British multinational pharmaceutical company GlaxoSmithKline was fined $3 billion after it admitted to encouraging the prescription of unsuitable antidepressants to children and bribing doctors. The company even sponsored lavish holidays in five-star hotels for the psychiatrist and had supporting articles in top medical journals which were written by the so-called independent doctors. As the doctors were playing golf and going fishing on their sponsored holidays, antidepressants were causing havoc in the lives of innocent children who didn't even need to go on these medications. Another antidepressant drug sold to adults was packaged as a wonder drug that could even help you stop smoking, stay happy, and lose weight. This case was termed as the largest case of healthcare fraud in the American history. Now, give it a thought. The victims of this healthcare fraud were just following science, weren't they? In case you want to broaden your perspective on science and scientific misconduct, I recommend you this episode, which is already available in public domain. Yes, we want to be progressive, and some of us even ridicule old traditions and traditional lifestyles, but have we done enough to discourage our own behaviors which are not backed by science? Have we done enough to educate our modern women about FASD? Have we told them what the best available science says about drinking alcohol during pregnancy? Have we done enough to discourage underage drinking that is linked to various types of crimes and sexual risky behaviors? Have we also realized that we are also creating a type of societal pressure on others to follow our ways and choices which are not even backed by science? Yes, we are rightfully concerned about some unscientific traditional practices as well as the spread of coronavirus. But have we done enough to discourage promiscuous behavior and casual dating that leads to multiple partners and the spreading of all sorts of viruses and infections? Don't we know that the best available science clearly says that no amount of protection can guarantee safe sex? Yes, it may be easy to criticize people, cultures and nations, but it is very difficult to do a sincere self-introspection. Keeping that in mind, I have published a series of multiple episodes that should help the viewers in broadening their perspective. The smart thing to do is to visit the WHO official webpage to get the latest